ओके सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, बिल्कुल हिंदी में ही बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई एम अ डेटा साइंटिस्ट और मोर देन अ डेटा साइंटिस्ट आई एम मशीन लर्निंग ट्रेनर फ्रॉम पास्ट 2 years। सो 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। सो आई एम टीचिंग इन सम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री फॉर लाइक 1 year। बट होता यही है ना कि आई हैव सम लिमिटेड सिलेबस, ओके, लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड टाइम। सो जितनी चीज़ें मैंने खुद ने सीखी थी फ्रॉम समवेयर, so I am not able to give that much thing to my students. I am not able to deliver that much thing to my students. So that is why actually मैंने ये अपना खुद का स्टार्टअप ओपन किया। ओके, so inside this in every in a gap of every 3 to 4 months I launch this kind of a program जो आपके 6 months का प्रोग्राम होता है। ओके, जो हमें 6 मंथ्स का ये प्रोग्राम, बिकॉज इसके अंदर हम डेप्थ में चीज़ें सीख सकते हैं। एंड केवल आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती फ्रॉम अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू, केवल ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि आप ऐसा डेटा साइंटिस्ट किसी कंपनी में अप्लाई करोगे या फिर ऐसा डेटा साइंटिस्ट आप कहीं जॉब के लिए जाओगे। इट गिव्स यू लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। सो जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते जाते हो, so you can also go for a data analyst job, you can also go for a machine learning engineer job, you can also go for a deep learning engineer job, you can also go for a computer vision engineer job, you can go for an NLP engineer job. So there are a lot of varieties. So अगर आप किसी एक चीज़ में भी स्पेशलिस्ट हो जाते हो, if you establish yourself in just one domain, so machine learning and a deep learning, और अगर मैं बोलूँ a complete artificial intelligence, it's not like just a single domain. Okay, so there are a lot of more domain in between all these things. So जैसा मैंने कहा, you can go for a data analyst, data scientist, then a machine learning, deep learning, then a computer vision, natural language processing. So these are all completely a different field. अगर आप किसी एक फील्ड में भी एक्सपर्ट होते हो, so you can easily grab the job and you can start your career in that field. Okay, so this course is actually for those जो because अब जो क्या कहते हैं, अब बिल्कुल ये समझ चुके हैं कि डेटा साइंस या फिर जो ये फील्ड है, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड नाउ वी नीड टू गो देयर। ओके, तो ये केवल ये डेफिनेटली उनके लिए है जो अब ये बिल्कुल समझ चुके हैं कि हाँ अब हमें इस फील्ड में जॉब लेनी है एंड और इस फील्ड से अब हमें अपना करियर स्टार्ट करना है या फिर हमें अपना करियर ट्रांजिशन करना है डेफिनेटली इस फील्ड के अंदर। ओके, सो this complete course is for the people like you. Okay, so if I talk about the roadmap, if I talk about the course goal, so yeah, the target audience is definitely those who have who want to be a data scientist. I only need your dedication. आप जितना ज़्यादा dedicated हो, please guys turn off your mic now, बिकॉज नॉइस होगी तो वो रिकॉर्डिंग होगी, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाओगे। सो आई ओनली नीड योर डेडिकेशन। ओके, सो डेफिनेटली हमारे कोर्स के अंदर कई प्रोफेसर्स एंड जो मेरे प्रीवियस बैचेस चल रहे हैं तो उसमें प्रोफेसर्स भी हैं एंड ऐसे भी लोग हैं जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बट दे रियलाइज़ कि अब उन्हें करियर में डेटा साइंस की ज़रूरत है और अगर उन्हें करियर में आगे बढ़ना है और कुछ अचीवमेंट करनी है तो उन्हें डेटा साइंस की ज़रूरत है। सो people who are in TCS, they are also like in my batches. Okay, so this is for everyone, mostly for the 4th year students, and because 6 months का जो इतना लंबा टाइम होता है उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए और उसके लिए आपको एक मोटिवेशन चाहिए जो कि आपको कुछ पहले से चीज़ें पता रहेंगी कि हाँ ओके नाउ आई नीड टू मूव ऑन, आई नीड टू मूव टुवर्ड्स द डेटा साइंस। Okay, so anyone who students, professor, and if you are working professionals, so most welcome. So this course is only for you guys. Okay, so like
I only need your dedication. And if you're working anywhere, or if you're a fourth year student, so definitely you have some basic knowledge of programming, which I am expecting from you guys. Only the basic knowledge, not the advanced Python. Like I didn't expect you so that you know about a class and most advanced thing like graphics and everything. I don't expect you this much thing. I only expect you like a simple and just a basic programming in a Python. Basic programming means if you know about loops and functions and uh, list of a dictionary. So that is what only we need in this program. Then okay, so this is like 6 to 7 months of a program. So you have like a 250 around 200 plus hours of a training, and we give you some one LMS portal. So in that portal आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी, लाइक आपके कोर्स मटेरियल. सो लाइक आपकी फर्स्ट क्लास हुई, सो आफ्टर द फर्स्ट क्लास योर वीडियोस विल बी रिकॉर्डेड, सो योर वीडियोस विल बी अपलोडेड. सो लाइक अगर आप किसी कारण से क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो, या मे बी अगर आपको उस क्लास को दोबारा पढ़ना है, सो यू कैन गो ऑन टू द पोर्टल एंड यू कैन वॉच द वीडियो अगेन. Then subject material is also available for you after every session or after every topic which I am cover in maybe in one class or maybe a combined two class. I just upload that module or notebook for you guys, so that you can read that module. And the third most important thing is after every module हमने आपके लिए definitely assignments रखा है. So I'm also dealing in projects. Okay, so we are right now we are having a small, we are just a small organization, but then also we are having a lot of projects from this particular domain, means data science and artificial intelligence domain, from like our clients who belonging to foreign countries. So definitely I will share some of the things as an assignment with you, and some of their projects as our main projects who are which are like industrial level projects. So after every module, आपके साथ एक assignment share किया जाएगा. You need to complete that assignment, and that assignment is definitely to assess yourself. Okay, so you need to assess yourself कि आप okay, आपने इस मॉड्यूल के अंदर अभी आपको और कुछ तो नहीं जानना है, या फिर अभी आपको और पढ़ने की ज़रूरत है. So you need to assess yourself after each and every module. And डेफिनेटली ये बहुत ही एक छोटी क्लास रहेगी. मीन्स वी आर नॉट अलाउइंग मोर देन 12 स्टूडेंट्स इन दिस सेशन. मीन्स पूरे कोर्स के अंदर 6 मंथ्स के अंदर वी आर नॉट अलाउइंग मोर देन 12 स्टूडेंट्स. सो वी जस्ट हैव लाइक 8 to 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. सो अब आप डेफिनेटली अगर कोई भी वीक स्टूडेंट है, या फिर लाइक एनी स्टूडेंट, आई डोंट थिंक कि कोई डेफिनेटली इस एज में हम किसी को बोले कि यार यू आर अ वीक स्टूडेंट और एनीथिंग, बट okay, but you are not able to pop up with that particular module. So definitely it's like a one-to-one mentorship. So I will guide you by taking a different time slot. I will guide you and I will try to like, okay, so after that the guidance you are definitely able to complete that assignment by yourself. Okay, so this is what we are this is what the benefit of this particular program, because anywhere I don't think that you will get one-to-one mentorship like this. Then the fourth one, definitely because it's a long program. So after in a deep learning, there are a lot of research papers which we need to analyze and which we need to implement. Okay, आपने सुना होगा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 1998 में पहला मॉडल आया था जिससे कंप्यूटर विजन के ऊपर कुछ काम हुआ था. कंप्यूटर विजन मतलब जो आप देखते हो कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बन रहे हैं, या फिर जितनी भी आप कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजीज अपने आसपास देखते हो, इवन अ फेस रिकॉग्निशन सिस्टम या इमेज क्लासिफिकेशन सिस्टम, किसी भी चीज़ को देख के आप इमेजेस को जो क्लासिफाई करते हो,
और इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर आप ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए आप कंप्यूटर विजन सिस्टम लगाते हो, ANPR सिस्टम जिसको हम कहते हैं। सो ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं, इनका जो सबसे पहला आप बोल दो कि इनका जो बर्थ हुआ था, दैट वाज इन 1998, जो जहाँ पे आपका पहला पेपर निकला था ऑन अ लीनियर 1998। बट उसके बाद एक रिवॉल्यूशन टाइप का आया फ्रॉम 2012 से लेके और आज 2021 तक। आई थिंक फर्स्ट पेपर से सेकंड पेपर आने में, या फिर फर्स्ट ब्रेक थ्रू से सेकंड ब्रेक थ्रू में आने में लोगों को 14 साल लग गए। बट आफ्टर 2012 आई थिंक अब 9 साल के अंदर वी हैव लॉट ऑफ रिसर्च पेपर इन दिस पर्टिकुलर डोमेन इन जस्ट अ कंप्यूटर विजन। तो आप समझ सकते हो कि आपको रिसर्च पेपर को एनालाइज करना, जो कि बहुत सारी जगहों पे नहीं होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरीके से रिवॉल्यूशन करते करते हम 2021 तक आए। ओके, सो इन 7 सालों के रिसर्च पेपर में, और ऐसा नहीं है कि 7 सालों के रिसर्च पेपर मतलब कि हमें कुछ 600-700 रिसर्च पेपर इम्प्लीमेंट करने होंगे। वी ओनली नीड टू इम्प्लीमेंट लाइक 7 to 10 research paper, but yes, that implementation is definitely required. Okay, then definitely our support team is there for you. So along with me there is one expert who will help you at any time, like if your system is not working fine because of on that thing. So yeah, that he will definitely help you. Then if any kind of a issue, so definitely my expert will help you. Or if he or she will not is not available at that time, so I will help you, because आप काम करने बैठते हो और आप बेसिक चीज़ में अगर कहीं पे फंस जाते हो, तो डेफिनेटली वो आपको फिर वहाँ पे मन नहीं करता, इरिटेशन होती है. सो वी हैव अ सपोर्ट टीम फॉर यू गाइस. देन या, सो फॉर अ जॉब रिक्वायरमेंट यू नीड टू, ओके, सो आपने रिसर्च पेपर पढ़ा और आपने बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ मैथमेटिक्स पढ़ ली, but if you are not able to show off your things, okay, show off your projects or show off your things, so definitely it will be difficult for you to get the job. So for that purpose we will also like we will all like develop a end-to-end project. End-to-end project means we are going to deploy our projects on a cloud system, maybe mostly on AWS, and it's also fine if we are trying to deploy it on Azure system or anywhere, any cloud platform. So we will deploy our system on this kind of a platform, and anyone can see your project or can like take advantage from your project just by a single link. Okay, so deployment means you just create a link, www.thisthing.com, and anyone can see that thing with that particular link. Okay. Then a remote internship. So after not after 6 months, but after 4 months, along with a continuous journey, your internship will also start. So internship means we will work on one real life project. Okay, so real life project means any project which you think, okay, so yeah, this will help society or any organization in some way or another. So we will work on that project, and that will be count in your internship. So that may go like for 3 months or maybe more than a 3 month, but yeah, that will be fine. But that internship is required because you will able to see that how the actual work is has been taken place in a data science industry. Okay. Then yeah, certificate. So we have a valid organization, so you can search for this, and so we have a valid organization, so our certifications, all the things are valuable and it's a valid thing. So we will also give you the certificate, and different certificate for both the things, so a course completion certificate and an internship certificate. And definitely it's a job oriented program, so career guidance and the resume building and interview preparation, so all these things
will be taken place, like after your internship and after the program is over. So all these things will be taken place for 50 months. So it's a one-to-one guide. It's not like it may be a guide. So guidance is going on through the program also, but it's a one-to-one guide also. So like if I have a 10 students, so one-to-one guidance for their career and for the resume making and for because the resume of a data scientist is totally different from any other domain. Okay. So this is what the benefits of this particular course. Okay, so anyone having any doubt or any question regarding this benefit, so you can unmute yourself and you can ask your query. The course will be on a daily basis or on only Saturday? A lot of noise from your side, Shubham. Okay, so if there is some noise in your background, so just type your query in a chat box. Anyone else, or Shubham, or are you writing your query? Hello, Shubham Jaiswal. It's actually Shubham Jaiswal. So Shubham, you can type your query in the chat box. I think we can proceed now. We'll be asking it after we are finished with this modules. Okay. So जैसा मैंने बोला कि it's a in-depth program. So we will start from a very basic. Okay, so we will start from a basic. So statistics and probability, I think you heard you heard it like anywhere. So statistics is and probability is a backbone of data science. Okay, so it's a backbone of your machine learning and a data science and a deep learning as well. So we will start with the stats and probability. Okay, so in a stats and probability, like there are a lot of things. They are not only statistical inference we are talking about. We are talking about a lot of things in a statistics and probability. That is why आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो topics हैं, so every topic we need to discuss. So descriptive statistics, then inferential, then probability, conditional probability, then distributions, then a hypothesis testing, which is a like a main requirement, then a central limit theorem, correlation, covariance. ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, सो आई थिंक आप कई जगह नाम सुनोगे स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग. So before a predictive modeling and statistical modeling are two different things. So like in a predictive modeling, we try to make some model by using some algorithm, machine learning algorithm, जो कि हमें ये प्रेडिक्ट करके बताती है कि ओके इन फ्यूचर या फिर ऑन दी अनसीन डेटा सेट क्या होने वाला है, लाइक वेदर फॉरकास्टिंग, किसी मैच की रिजल्ट का प्रेडिक्शन करें. ओके, सो इन फ्यूचर किस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं, या क्या पैटर्न है फ्यूचर में, किस तरीके का पैटर्न फॉलो होने वाला है, लाइक इन स्टॉक मार्केट किस तरीके का ट्रेंड चलने वाला है. ओके, सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ प्रेडिक्टिव मॉडलिंग. ओके, but before a predictive modeling we need to do the statistical modeling means कि अभी तक डेटा में किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, अभी तक डेटा में किस तरीके के ट्रेंड है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स. कई बार ऐसा होता है कि आपको डेटा के अंदर कई सारे फीचर्स दे दिए और कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है डेटा सेट के अंदर. दे आर जस्ट इंक्रीज योर दे आर जस्ट डिक्रीजिंग योर एफिशिएंसी टू मेक अ प्रेडिक्टिव मॉडल.
So we need to remove that features, we need to remove some noise, we need to remove some outlets. So all these things we are going to learn in a statistics and probability, that what kind of a feature we need to preserve and what kind of a feature we need to remove from the data set. Okay, so it's a kind of a data preparation, we need to prepare the data. So actually it's basically it's a kind of a thing which make you ready for a data engineer. Okay, so it's a job of a data engineer कि वो डेटा को बिल्कुल प्रिपेयर करके साफ सफाई करके बिल्कुल डेटा को क्लीन करके वो आगे फॉरवर्ड करता है डेटा साइंटिस्ट के पास, एंड देन इट्स अ जॉब ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर to make a predictive model on that particular data set. Okay, so it's again one completely different domain, that is our data engineering. Okay, then अब आप देखो second module, it's a Python for data science. So definitely जो भी चीज़ें आप stats के अंदर सीखोगे and there's some other things also, we are going to explore that thing with the help of a Python. Okay, so Python have different libraries, so that and with the help of that libraries we can definitely explore these things. Okay, so we have a NumPy, we have pandas, we have data visualization libraries like matplotlib, seaborn. And the main concept of explorative data analysis means a statistical analysis. Okay, so whatever the things we learn theoretically in that module 1, or maybe we do some numerical part in module 1, that we are going to program in a module 2 with the help of a Python. Okay, so इस तरीके से आपको सीखने में भी अच्छा लगेगा, बिकॉज आपने मैथमेटिक्स पढ़ी, आपने मैथमेटिक्स को न्यूमेरिकली किया बैठ के, एंड देन इट्स टाइम टू प्रोग्राम इट. Okay, so in a module 2, then in a linear algebra. So linear algebra is again a very important concept in a linear algebra. So these two mathematics domain are actually important for any machine learning and a deep learning kind of a thing. So statistics and probability and a linear algebra. So in a linear algebra also we need to I think most of you are already know about linear algebra and about its mathematics. Okay, so there are a lot of mathematics which we already know, because इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो हम किसी न किसी क्लास में मे बी 10th 11th एंड इन सब क्लासेस में हमने पढ़ रखी है. बट या बिकॉज वी फॉरगॉट दिस थिंग, सो इट्स आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर familiar with most of the terms. But yes, we are going to discuss, and we are going to okay, those who are not knowing anything, so it's from the very basic, and who know, so it's a revision class for those people. Okay, then feature engineering again. So this is again the important phenomena. So जिस तरीके से हम statistical modeling या फिर statistical analysis करते हैं, हम data analysis जो भी करते हैं, मतलब जिस तरीके हम data को analyze करते हैं in a statistical modeling. सो फीचर इंजीनियरिंग में क्या होता है, फीचर इंजीनियरिंग में हम डेटा को वापस से आपकी डेटा के अंदर जो भी आपने एनालाइजेशन से देखा कि डेटा के अंदर क्या क्या फ्लॉस है, फ्लॉस का मतलब नॉइस कहाँ पे हैं, या फिर आपकी डेटा क्लीन नहीं है, या फिर आपकी डेटा के अंदर बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज़ हैं. ओके, और जब आपके पास टेक्सचुअल डेटा होती है तो टेक्सचुअल डेटा तो काफ़ी मेसी होती है. ठीक है, वो डेटा तो आपकी बिल्कुल ऐसी होती है, वो बिल्कुल मैस्ड अप डेटा होती है. सो उस डेटा को क्लीन करना, और फिर बिकॉज आप टेक्सचुअल डेटा को या फिर ऐसी किसी भी डेटा को एक्चुअल में रीड नहीं कर पाते हो, सो आपको उन जो टेक्सचुअल डेटा होती है उसको वेक्टर के फॉर्म में सजाना होता है. सो उसको वेक्टर के फॉर्म में सजाने के लिए वी नीड टू लर्न दिस फीचर इंजीनियरिंग. ओके, सो these are all the things which are going to learn up to module 4. So up to module 4 अगर आप सीख लेते हो, so you can go for a data analyst or you can go for a data engineer job definitely. Okay. Then मॉड्यूल 5 से आपका एक्चुअल मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं वो स्टार्ट होंगे. So from module 5, so in a module 5 this is the very first algorithm, that is a linear regression.
ओके, सो आई थिंक अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता होगी कि मशीन लर्निंग को, क्लासिकल मशीन लर्निंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। सो सबसे पहले हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग के टाइप्स को पढ़ेंगे या सुपरवाइज मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को पढ़ेंगे। So this is the very first algorithm in a supervised machine learning, that is a linear regression. So each and everything, जो भी linear regression के अंदर जितने भी important concept हैं या जितने भी important phenomena हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे along with the code implementation, means a background mathematics. So each and every algorithm have some mathematics and some mathematical equation associated with that. So mathematics, सबसे पहले तो हम mathematics cover करेंगे and after covering the mathematics we are going to code it. Okay, so code implementation, a practical class is also there. So I think in a same class we are going to see all these things, so it will clear your doubt, because आप किसी डाउट के साथ आप क्लास से बाहर नहीं जाओगे कि इट्स जस्ट मैथमेटिक्स थिंग और इसमें मैथ है तो हम इसको कैसे सीखेंगे या कैसे करेंगे. वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस विद पाइथन. देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन अ परफॉर्मेंस मेट्रिक. परफॉर्मेंस मेट्रिक मतलब क्या कि आपने मॉडल बना लिया, अब आप मॉडल को इवेल्युएट करते हो, कि आप मॉडल को चेक करते हो कि यार आप मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, बिकॉज बिना चेक किए, बिना टेस्ट किए आप उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते. So you need to test your model. So for testing your model, you have different performance criteria or different performance metrics. So these are the some performance metrics जो कि हम पढ़ेंगे अपनी परफॉर्मेंस की, अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए. Then again, algorithms like k-nearest neighbor, naive Bayes, support vector machine, these are all the algorithms only. Then a decision tree, ensemble models. Ensemble models are really important, or it's a way important in a real machine learning problems. Okay, real world machine learning problems, because real world machine learning problems जो होती हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, जो कि नॉर्मल प्रॉब्लम से आप बोल सकते हो कि थोड़ी वो टिपिकल होंगी या वो टफ होंगी. सो वहाँ पे ensemble का मतलब होता है सबको कंबाइन कर देना. ओके, सो यू आर ट्राइंग टू कंबाइन सम एल्गोरिदम, सबको नहीं, मतलब आप ऐसा नहीं कि सबको एक साथ उठा के कंबाइन कर दिया. जस्ट आप यू नीड टू थिंक. ओके, सो बिकॉज हर एल्गोरिदम्स के अपने ड्रॉबैक्स होते हैं एंड हर एल्गोरिदम्स के अपने एडवांटेज होते हैं. सो यू नीड टू थिंक, ओके यहाँ पे ये एल्गोरिदम काम आएगा, एंड you can combine some of the algorithms and then make a different algorithm from that. So ensemble model are like that. Then a hyperparameter optimization, this is again a very important thing. Optimization means जब भी आप अपने मॉडल को चेक करोगे तो देयर इज सम एरर. डेफिनेटली आपका मॉडल पहली बार में आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, और मे भी अगर देता है तो बहुत अच्छी बात है, बट इट मे पॉसिबल कि वो आपको 100% रिजल्ट ना दे. सो जितने भी आपके 100% से जितने भी कम रह गए, मे बी अगर सपोज 90% या 80%, सो दैट इज अ काइंड ऑफ एरर, मीन्स 10% और 20% का एरर है आपके मॉडल में. सो यू आर ट्राइंग टू minimize that error, you are trying to minimize that error, minimize that loss. So वो error को आप कैसे minimize करते हो? By using the optimization technique. So वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे. Then a dimensionality reduction. So जैसा मैंने बोला कि you have some feature selection techniques with the help of statistics, or with the help of your statistical knowledge, you can perform feature selection technique. But कई बार ऐसा होता है कि फिर भी हम हमारे पास में भी बहुत सारे फीचर्स रह गए, हमने अपनी स्टैटिस्टिकल मॉडल लगाई, मे बी आपके पास 100 फीचर्स है, सो बहुत सारे फीचर्स फिर भी रह गए. So at that time you can use a dimensionality reduction technique. So this is a completely different technique from the statistical domain. So you can use this technique to reduce the features. तो ये भी चीज़ हम देखेंगे इसके अंदर. Then unsupervised learning, आपकी सुपरवाइज खत्म होने के बाद then unsupervised learning. So unsupervised learning is very important. Like आप ये काम लगभग रोज करते हो. अनसुपरवाइज लर्निंग के जो काम है, ये काम आपको अपने मोबाइल में रोज दिखता होगा. सो अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रिकमेंडेशन सिस्टम, ये दोनों चीज़ आपको मार्केट में चले जाओ या फिर आप अपने मोबाइल पे देखो तो आपको ये दोनों चीज़ें बहुत दिखेंगी. सो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है कि आपको एक्चुअल में लाइक
आप मार्केट की एनालिसिस करते हो, तो आप किसी सुपर मार्केट में चले जाओ, आप किसी सुपर मार्केट या किसी मॉल में चले जाओ, तो आप देखोगे कि जो चीज़ें आपके बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ओके, वो बिल्कुल आपके ग्राउंड फ्लोर पे या बिल्कुल आपके सामने रखी जाती हैं ताकि वो जल्दी से बिके। सो वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ एक तुक्का लगा दिया है। दैट आर ऑल मार्केट एनालिसिस काइंड ऑफ अ थिंग। उन्हें पता है कि कोई अगर ब्रेड एंड बटर ले रहा है, तो मोस्टली ब्रेड एंड बटर के साथ लोग मिल्क लेते हैं या एग लेते हैं, तो वो ब्रेड बटर एंड एग को एक साथ रखते हैं। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ मार्केट बास्केट एनालिसिस, या बोल दो आप मार्केट एनालिसिस काइंड ऑफ अ थिंग. So you need to do this analysis and you need to recommend your supermarket client or any client so that उसके सेल में इंक्रीमेंट हो. Okay, so this is what we are going to learn in unsupervised learning. Then a recommendation system आप डेली देखते हो, so you can सभी लोग यूट्यूब देखते होंगे, नेटफ्लिक्स पे वीडियो देखते होंगे, या फिर हम अमेजन प्राइम पे वीडियो देखते हैं, या फिर आप अमेजन से कोई शॉपिंग करते हो या फिर फ्लिपकार्ट से कोई शॉपिंग करते हो. सो यू कैन सी दैट काइंड ऑफ रिकमेंडेशन. ओके, सो आई थिंक यूट्यूब का रिकमेंडेशन सबसे अच्छा है. सो आप देखोगे यूट्यूब पे आप जो वीडियो ज़्यादा देखते हो उसी की रिकमेंडेशन आपको दिन भर आते रहते हैं. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिकमेंडेशन सिस्टम. Okay, and then the same thing with the Netflix also, the same thing with the Prime videos also, and the same thing with any e-commerce website also. Okay, so आप मिंत्रा पे चले जाओ, आप अमेजन पे चले जाओ, आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करो, आपको ये चीज़ें दिखेंगी. Okay, then our time series forecasting. So time series forecasting is again very important thing, because आपको time series forecasting आप जितने लोग बेसिकली सेल्स के अंदर मार्केटिंग करना चाह रहे हो, या फिर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करना चाह रहे हो, सो आज इस टाइम पे या फिर आने फ्यूचर वाले टाइम पे, सो टाइम सीरीज इज गोइंग टू बी लाइक अ बिगेस्ट मार्केट इन दिस फील्ड, बिकॉज काफ़ी कम लोगों ने इसके ऊपर रियल टाइम में एल्गोरिदम्स बना रखी हैं. तो अगर आप कोई रियल टाइम पे एल्गोरिदम बनाते हो किसी भी स्टॉक प्रेडिक्शन के लिए या किसी भी प्राइस के लिए, किसी भी एक आप कॉइन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप बनाते हो, सो दैट विल बी डेफिनेटली हेल्प यू टू like establish yourself. So that is a time series forecasting task. So you have a different model. Okay, so you have a different kind of a model to build this kind of a stock prediction thing. Okay, so stock prediction thing, not only the stock prediction, sales prediction also. Then you can also predict the temperature. You can आप देखते होगे भी जो कोविड के केसेस आप देखते होगे, जो आप ग्राफ देखते होगे कि डाउन हो रहा है, देन ऊपर जा रहा है, वापस से डाउन हुआ. ठीक है, सो दैट ग्राफ इज वो जो ग्राफ आपके बन के आते हैं, दैट इज बाय यूजिंग द ये जो आपको यहाँ पे एरिमा एंड सेरीमैक्स दिख रहा है, so that is by using the ARIMA model. Okay, so that is also the thing, that is also a concept of a time series, that is also built on the concept of a time series. So because हमारे पास डेटा है, हमारे पास ये डेटा है कि कोविड के केसेस किस टाइम पे कितने थे, तो बेस्ड ऑन दैट डेटा बेसिकली वी आर मेकिंग एन एनालाइजेशन. सो आई थिंक अगर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा, सो IIT कानपुर के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत आई थिंक मे के अंडर उन्होंने ये मॉडल तैयार करके एक एनालाइजेशन दे दिया था विद द हेल्प ऑफ ARIMA मॉडल की 10th of Jan तक बहुत सारे शहरों में, जो यूपी के बहुत सारे शहर हैं, उन्होंने यूपी के ऊपर बेसिकली अपना मॉडल बनाया था. तो यूपी के जो काफ़ी शहरों में आपके केसेस 100 से कम हो जाएंगे, एंड द मॉडल इज़ प्रिटी गुड, एंड आई थिंक द सेम थिंग विल हैपन. सो इस तरीके की टाइम डेटा के ऊपर आप क्या कहते हैं फॉरकास्टिंग मॉडल बना सकते हो. आफ्टर दैट एंड अगर आप यहाँ तक भी चीज़ों को सही से समझ लेते हो और सही से कर लेते हो, सो you can do the stock prediction, and you can also apply for a machine learning engineer. Then the next module, introduction to deep learning. So deep learning neural network is what? It's a kind of a thing which mimic the human brain. ओके, तो जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन काम करता है, जिस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, सेम उसी तरीके से आपका न्यूरल नेटवर्क काम करता है. ओके, सो इट्स डिजाइन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. ओके,
सो विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क, तो प्रॉब्लम क्या है मशीन लर्निंग के साथ, क्या प्रॉब्लम है कि यू कैन ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अ स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब क्या होगा कि आपको कैटेगरीज के फॉर्म में डेटा मिलेंगी, आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज के फॉर्म में डेटा मिलेंगी, ओके, बट you cannot solve the problem of unstructured data. Unstructured data means images की डेटा हो गई, या फिर वीडियोस हो गए, या फिर ऑडियो हो गया, या फिर टेक्स्ट हो गया। तो ऐसी चीज़ों को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो होती हैं वो इफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर पाती हैं। So that is why we need to move towards the deep learning concepts. Now deep learning can solve the problem of unstructured data. Okay, so you can do the image classification, like अब आप इसके अंदर देखोगे CNN. So CNN is used for an image classification task. Any kind of images, any kind of image in the entire world, whether that's a very blurry image, or maybe image of a, or maybe you have 1,000 different animals. Okay, you have 1,000 different animals, so you have 1,000 different class. Then also CNN can make a classification. With the help of CNN, you can make a classification model that can classify those 1,000 different animals. Okay, so you can make a image classification model, you can make a video segmentation, okay, so or you can also make a audio segmentation or audio recognition model. जैसे आप लोगों ने अगर कहीं पे देखा होगा तो जो क्रिकेट के मैचेस होते हैं, सो लाइक जिस तरीके से कमेंटेटरी होती है उसको मिमिक करके भी आप डीप लर्निंग मॉडल के थ्रू बना सकते हो कि द सेम कमेंटेटरी जो आकाश चोपड़ा कर रहा है तो सेम कमेंटेटरी आप अपने मॉडल के थ्रू करवा सकते हो। So that is the thing which deep learning can do, that will not possible with the help of machine learning algorithms. So ये चीज़ें हम basically deep learning के अंदर देखेंगे with the help of CNN, and then with the help of so this is a computer vision concept. तो सबसे पहले डीप लर्निंग के अंदर कंप्यूटर विजन को देखेंगे। कंप्यूटर विजन मतलब images and videos के ऊपर काम करेंगे, and then after that with module 22 we are shift towards the textual data. So textual data के ऊपर काम करना भी काफ़ी important है, like आप natural language processing के ऊपर हम काम करेंगे। So नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मीन्स आपके जो लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आप देखो कि कितने फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्पेलिंग करेक्टर, एंड देन there are lot of things with the audio, with the text file. Okay, so text file के साथ आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइक कई सारे ट्वीट्स होते हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, कई सारे ट्वीट्स होते हैं जो बिल्कुल इन सब चीज़ों से अलग होते हैं। So we can make a sentiment analysis. So sentiment analysis means, okay, so ये जो tweet है, this type of tweet are dangerous for the society, this type of a tweet is like okay, this type of tweet is only belong to a cricket, so that is fine, that is there is no harm to the society. So you can make that sentiment analysis model with the help of natural language processing. Okay, so this is the last module. Means in a deep learning we usually work on a image data or a video data, and then in a natural language processing we work on a text data. Okay, so and these are all the projects, but definitely केवल इतने projects नहीं हैं जो हम discuss करेंगे, they are more than that, but these are all the projects जो हमने initially डाल रखे हैं। ओके, सो ये तो डेफिनेटली ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट जैसे जैसे जो सिनेरियो चेंज होता जाएगा, ओके, सो लाइक अभी बीच में कोविड का आप देखो जिस तरीके से आ गया था, तो लाइक जो मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने बेसिकली कोविड के ऊपर वो टाइम सीरीज एनालिसिस वाला ग्राफ बनाया। सो डेफिनेटली as the time passes we are going to add some more projects, some more interesting projects, और maybe like हमें जो projects मिलते हैं, so ऐसा कोई interesting project मिलता है, so definitely we are going to add to that project in this domain. And mostly we are mostly have a project from a healthcare domain, because these are the two fields जहाँ पे अभी machine learning और AI को बहुत आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। लाइक आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात कर लो या फिर आप स्टॉक मार्केट्स की बात कर लो, सो डेफिनेटली वहाँ से जिस तरीके से हमें और प्रोजेक्ट्स आते हैं, सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस दोज प्रोजेक्ट्स विद यू गाइस ऑल्सो। And then there is one thing, generative adversarial network GAN.
सो गैन बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है इन अ फील्ड ऑफ एआई, but it's definitely in a future it is going to be like a solid thing, okay, because गैन से आप क्या कर सकते हो. सो गैन अगर आपको मैं एक एप्लीकेशन बताऊँ, सो लाइक आप शायद अभी यूट्यूब पे जाओगे तो आपको एक मतलब आप किसी भी फेस का एक मॉडल क्रिएट कर सकते हो. लाइक आप नरेंद्र मोदी जी का एक क्या कहते हैं फेस लगा दो, एंड आप मन की बात मिमिक करवाओ, जैसे इन अ सेम वे जैसे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, सेम उसी तरीके से वो मॉडल या फिर वो ह्यूमन बीइंग आपका जो मशीन है, आपका जो रोबोट है, वो सेम उसी तरीके से बात करेगा जिस तरीके से मोदी जी बात कर रहे हैं. सो दैट इज द application of a GAN. So yes, in a bonus lecture, I am also going to talk about this generative adversarial network. Okay, so that is all. That this is the final one from in our program, and this is all from my side. Okay, and now it's your turn, guys. So if you have any query, any question, so just raise your hand. I will, because अगर एक साथ सब बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा. So I will unmute you and you can ask your query. Hello. Yeah. Yes, Shivam sir, I just wanted to ask a question. Like, what is the fee structure and how we can pay it? So can you please tell that thing to us? Okay. So like I think मैंने हमारे जो लिंक है वो मैंने आपको दिया हुआ है. सो जैसे ही आप उस लिंक को फिल करते हो और आप फॉर्म सबमिट करते हो, सो आपको एक मेल आएगी. इन दैट मेल आपको ये जो सेम थिंग जो मैंने पूरी आपको बता दी, द सेम स्ट्रक्चर आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा. एंड बिकॉज आपके पास भी ये पीडीएफ रहेगी, सो इन फ्यूचर आपको कभी भी लगता है कि वी आर मिसिंग एनी टॉपिक, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी. एंड द सेकेंड थिंग, वहाँ पे आपको एक पेमेंट की लिंक रहेगी. सो अभी के लिए आप यू ओनली नीड टू पे 500 रुपीज़, okay, just for the registration, or just for the because we are going to start from 19th June. Okay, so बहुत ज़्यादा दिन नहीं है. सो आपको 500 रुपीज़ पे करने वहाँ पे, और जो टोटल फीस है दैट इज़ ओनली 12,000 रुपीज़. तो आप 500 पे कर देते हो, सो आई थिंक उसके बाद आपके 11,500 रुपीज़ बचेंगे. So you can pay that 11,500 rupees after like 2 weeks of a lecture. Okay, so I think 2 or 3 weeks. Okay, you can also take like 3 weeks, because in 1 week we have only 2 classes, so on Saturday and Sunday of like 2 and 2.5 like 2.5 hour maybe. So so in 2 days we have like 4.5 to 5 hours of lecture. So you have more than 10 hours to analyze. Okay, so this lecture is going to benefit you, or you are able to pop up, you are able to continue or not. So I think 10 hours are more than enough to uh, realize. Okay, so you can pay after you can pay the whole fees after like 10 hours, or maybe you can also take maybe if you have any doubt, or if you're not able to realize in 10 hours, so you can take 15 hours. So you can pay after 2 weeks. So that is what I want, that आप अगर 2 हफ्ते में पे कर दो, otherwise you can pay after 3 weeks. So that is the thing with the fees structure, and you can it's only 12,000. So total 12,000. Right now you need to pay only 500. So you need to fill the form. Uh, if you want, I can share the form in a chat box right now also. I've already shared the link, the registration link. Okay, so you can register yourself. After registration, you got the mail, and in a mail you have that payment link. So just go on to that payment link, and then you make your payment 500. Shubham Halwai has a question. Okay. Yeah. He says, what is the use of R Studio in DS, data science? Okay, R Studio. So R Studio and Python, like a Python, R Studio is also a kind of a programming language.
So our class, we are so definitely in just one program. One program is going on just one programming language. Okay, so our class is going on a Python programming language. R is also a programming language for data science, or you can say artificial intelligence. But if you check the popularity, so Python is more popular, and Python is most of the data scientists use Python uh, over R. So हमारा क्लास जो है वो पाइथन के ऊपर चलेगा. वी आर गोइंग टू यूज पाइथन, वी आर गोइंग टू वर्क विद अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज एक प्रोग्राम के अंदर हम केवल एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम कर सकते हैं. So R is also a programming language. Python is also a programming language, but Python is more popular and Python is a more simple. So that is why we are going with the Python. Okay. Anything else? Anyone having any questions, please unmute yourself and ask question, or you can type your question in the chat box also. Any type of questions is valid, like regarding job or anything. If you want to ask, you can ask. Yeah. So no one has any question. Okay. So if anyone have no doubt, or if anyone not having any questions, so we can end this meeting. Subham. Yes. So we just a second. So Shubham Halwai got another question. No, he is saying thank you for your guidance, sir. Okay, no problem. Thank you so much. Thank you so much for Thank you all for your valuable time, and we'll check. Thank you so much. Thank you so much, guys. Please register yourself if you guys are ready. We have shared a registration link in the chat box, and if you want, you can text me on WhatsApp. I'll share the registration link so Or that you can. one thing, I will share the registration link at one in a chat box. Yeah, I already shared that. So if anyone wants, so you can directly start use this link from chat box, or you can WhatsApp to Subham and he will give you the link. Yes. So thank you so much, everyone. So we can wind it up now, sir. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Have a good day, everyone.